Good afternoon, everyone. From today, I'm going to take your spoken English and grammar classes. Okay, so this is the very first class. So make sure that you have your note copy, one pen, pencil, sharpener, eraser, scale. So whatever you can have to make it proper. Means it is very important to make notes. Okay, because anything we do, how we do it is very important to get success. Okay, so today I am going to teach you parts of speech or sentence. While talking or writing we use sentences, right? That sentences consist of many words means words means combination of letters, right? All the words can be broadly classified into 8 groups. First is noun, that is sangya. Second, pronoun, that is sarvanam. Third, verb, that is kriya. 4, adjective, that is visheshan. 5, adverb, that is kriya visheshan. 6, preposition, that is sambandh bodhak avyay. 7, conjunction, that is samuchay bodhak avyay. 8th, interjection, that is vismyadi bodhak avyay. So guys, if you really want to study from me, you have to follow some rules. That the first rule is you have to make notes. The second rule is you have to learn each and every word from the notes. Okay, you have to know the spelling of each word also. Okay, so learn it. For today, this much is sufficient. First of all, learn it, and then in the next video tutorial I'll teach you all the parts of speech by definition, by example also. So word of the day, that is speech. Speech means बोल, भाषण या फिर बात, right? Note. For better result, make notes regularly. Thank you. Okay, so that was in English. Now for the people who speaks Hindi but wants to learn English. Okay, spoken English and grammar. Parts of speech means you must know type of any word that can be known or written, और शब्द भेद, यू कैन से एग्जैक्टली द मीनिंग. ओके, जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, राइट? वो सेंटेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं राइट, शब्द. वो शब्द, उन शब्दों को 8 कैटेगरी में, ग्रुप में बांटा गया है. ठीक है, हिंदी में आप ऑलरेडी जानते होंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय. ओके, सो फर्स्ट संज्ञा को नाउन कहते हैं. सेकंड, सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं. थर्ड, क्रिया को वर्ब कहते हैं. फोर्थ, विशेषण को एडजेक्टिव कहते हैं. 5, क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहते हैं. 6, संबंध बोधक अव्यय को प्रीपोजिशन कहते हैं. 7, समुच्चय बोधक अव्यय को कंजंक्शन कहते हैं. 8, विस्मयादि बोधक अव्यय को इंटरजेक्शन कहते हैं. गाइस, प्लीज़ स्पेलिंग लर्न ज़रूर करना. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करना, इसको तभी सेकंड वीडियो अच्छे से समझ आएगी, या फिर आप बेटर वे में आप जो चाहते हो वो सीख पाओगे. अदरवाइज नोट्स बहुत है, वीडियोज़ बहुत है, ठीक है, बुक्स भी बहुत हैं, बट वो सारी चीज़ों को, कंटेंट्स को माइंड में जब रखोगे तभी यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट? ओके,
Thank you so much everyone for today. It is over.